on very important and relevant topic on GST. एंड सबसे पहले तो मैं CISC को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी दी कि एज ए मॉडरेटर मैं कुछ यहाँ पर प्रोग्राम को मॉडरेट कर सकूँ. तो थैंक्स टू CISC एंड senior members of CISC and chairman sir. And I welcome on behalf of CISC all the members who are present today. And your voice is not still clear, so I think it is cracking. Your voice is cracking. सर हम लोगों का जो टॉपिक है रेलेवेंट टॉपिक है वो GST पर है और डिपार्टमेंटल इश्यूज पर, डिपार्टमेंटल ऑडिट पर और एडजुडिकेशन पर है. और हमारे बीच में आज बहुत यंग और डायनेमिक मेंबर आए हैं जो GST पर बोलेंगे. मिस्टर सिद्धांत पाठक जी जो दिल्ली से हैं और he was partner in Ashok Batra and Company and he is in practice GST practice from the last 5 years. और हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे और हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन इस मीटिंग के बाद लोगों के बहुत सारी क्वेरी डाउट जो डिपार्टमेंट से जो नोटिस आ रही हैं डिपार्टमेंटल से डिपार्टमेंट के साथ हम लोग जो बहुत सारी काम करते हैं तो कई तरह के इश्यूज आते हैं. रिप्लाईज कैसे दें या कैसे डिपार्टमेंट किसी क्लाइंट के बिहाफ पर कोई नोटिस आया तो उसको कैसे सॉल्व करें. तो ये सारी चीजें हो सकता है आज की मीटिंग के सारे हमारे डाउट क्लियर हो जाए. तो उससे पहले मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा अपने CISC चेयरमैन सर का अतुल नरसरा जी का जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया और हम लोगों को बड़ा अपॉर्चुनिटी हुई कि हम लोग कोई भी रिलेवेंट टॉपिक से वंचित ना रह जाए. सारी इंफॉर्मेशन और बहुत मीटिंग उन्होंने मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मैं उनको वेलकम करूंगा कि वो अपने कुछ वर्ड हमारे बीच में रखें और उसके बाद लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. सर एक टीम अतुल सर. थैंक यू संतोष जी. Today's moderator and today's speaker both are very young chartered accountants from our family and respected seniors, professional colleagues, boys and girls. Very good afternoon to all of you. As said by Santosh ji that today's topic is very important for all of us. Though we have gone through a few sessions, may have gone through on the same topic, but I am sure that still after having attended a few more programs earlier, today's program will be in a different manner and it will facilitate our members how to resolve the issues involved in the departmental audit and adjudication under GST. As far as our CIRC is concerned, we all know that our team is working and celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. As per the government's wishes, our CIRC is also having 75 programs for 75 days. We started from 2nd June and still either physical or virtual, there is regular programs on daily basis, taking the learned speakers from the country and other motivational subjects as well. As one more information is for the knowledge of our members that a mega event is going to be held in Mumbai from 18th to 21st November. The World Congress of Accountants, and our country, our ICI has been honored to host this program after 118 years of the International Accounting Body's membership. So you all are requested to go through the details of the program. There is a registration process and our profession is going to be changed in every 10 to 15 years. What are the changes which we are not able to analyze in the coming years? There will be participation from the various countries of the world, accounting professionals of the world.
and what are the changes which are required for our growth, even I can say that for the survival also. So when we interact with the international professionals during 4 days mega event at Mumbai, then there may be some issues or areas of our profession which may be a diversification of our profession or even eye opener for few of us. So it's my humble request. You all are requested to please get yourself registered with your friends so that a mega picture, big picture of our profession may be seen by joining that mega event. We have already started the program on WOW, Women on Wednesday, just to promote our female members from various cities and various entire CIRC. And this program is very much appreciated by our seniors and female members as well. So any female member who is interested to and either any way to participate in that event, she is most welcome, and directly call me or any CIRC office bearer or any of the office bearer from your city that you are interested for participating in that event. 15 अगस्त आ रही है और आप सभी लोगों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमें ये देखना है कि एज ए प्रोफेशनल, एज ए सर्विस प्रोवाइडर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग कैसे अपने अंदर क्या चेंजेस करें, क्या निर्णय लें, क्या एक छोटा सा चेंज करें अपने अंदर, जिससे कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल बनकर, अभी भी अच्छे हैं लेकिन और बेहतर बनके कैसे हम अपने देश की, अपनी गवर्नमेंट की और सोसाइटी एट लार्ज की को कैसे सर्व कर सकते हैं। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अब आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए एमओसी को सिद्धांत पाठक जो दिल्ली से हैं, बहुत ही यंग और एनर्जेटिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैंने उनको कई बार सुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है आज के सब्जेक्ट पे, और जो लोग भी आज पूरा सेशन ठीक से सुनेंगे उनको जरूर ये महसूस होगा कि ये बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक सेशन था आज का। सो ओवर टू संतोष जी। थैंक यू। संतोष, आवाज नहीं आ रही है आपकी। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट, अनम्यूट करिए अपने को। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। थैंक यू चेयरमैन सर, जिन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से कमिंग इवेंट्स आने वाले हैं। मुंबई में मेगा इवेंट होना है और 15 अगस्त के लिए लोगों को एक मोटिवेशन दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। और मैं इसी के साथ जो है ना आज के लर्नेड स्पीकर ये सिद्धांत पाठक जी को वेलकम करना चाहूंगा कि वो कुछ बोले आकर के। बहुत यंग और बहुत डायनेमिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी नॉलेज से हम लोग जरूर मतलब विश्वास है मेरा कि जो ना इस सेशन के बाद हमें कई चीजें नई सीखने को मिलेंगी और हमारी सारी क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि आज का सेशन सर स्टार्ट करें। तो आई वुड लाइक टू वेलकम श्री सिद्धांत पाठक जी। सर, इट्स सिद्धांत। At the outset, I would like to thank Chairman Sir, CIRC, and the entire team of CIRC for giving me this opportunity to share my thoughts on the topic. I would like to thank Santosh ji as well for giving the introduction. Now, the topic for the day, GST, Departmental Audit and Adjudication under GST. So I hope my voice is perfectly audible. Perfect. So I'll be sharing my yes, audible, perfect. PPT now. Now this departmental audit
First, we need to understand why there is the need for audit. I would not be deliberating on the statutory provisions, or rather I would be deliberating on it for a very short period of time. And I would be deliberating on the practical issues which we come across during the audit, and what are the problems which are posed to the taxpayers during the audit. So for this, first we need to understand why was there any need of audit under the law. Now, as we all know, GST is a self-assessment based taxation. So you are self-assessing your output tax liability, you are self-assessing your input tax credit, and you are filing this GSTR 3B return every month and paying the tax liabilities. When I talk about self-assessment, I will draw attention to a very important judgment which was pronounced under GST by the Supreme Court, and we all must have heard about it. That is Union of India versus Bharti Airtel, wherein the decision was against the taxpayer, but Supreme Court had made very wonderful remarks about the regime, how the regime of GST operates. It says that the GST regime is not at all different from the erstwhile regime of central excise or service tax, which we used to have, so far as self-assessment is concerned. Under GST, we have to self-assess our liability as well as our input tax credit, and that self-assessment has to be done on the basis of books of account, on the basis of invoices, on the basis of agreements entered into with the buyers as well as the suppliers. So self-assessment has to be done on the basis of these three primary documents. And portal, the GST and portal, is merely a facilitation tool to feed or retrieve the information. I will be discussing this during the subsequent slides. How is portal posing a problem? And you are all aware about it as well. So with this background of self-assessment, how the law ensures that the interest of the revenue is protected. When the law is self-assessment based and you have to self-assess your liability, then how does law ensures that the interest of the revenue is protected? So they have placed various provisions at different stages in the law. Chapter 12 talks about assessments, wherein you are having provisions from section 59 to 64. 59 is self-assessment. 60 is provisional assessment. Then 61, scrutiny of returns, which is the most popular one, wherein we are getting GST ASMT 10 notices. Then 62, best judgment assessment for non-filers of returns. 63, unregistered persons. 64 is protective assessment, where department has reasons to believe that if due process of adjudication is followed, then it will take a long time and the person will abscond. So in an expeditious manner, they can confirm the demand against a person. Then under chapter 13, which is the topic of the day, there are two types of audit. Audit by tax authorities under section 65. Audit under section 66, where department audit appoints a chartered accountant to conduct the audit. This is primarily done in cases of large public sector undertakings. Otherwise, generally we see that department only does the audit under section 65. Then the third stage is investigation, which is much more stringent, which is on a particular issue, wherein the department is having reasons to believe that you are suppressing a particular transaction of supply, or you are secreting any goods which are liable to confiscation. So in these cases, department has the power to inspect, to even do search and seizure, then power to arrest, and so on. Power to summon is there for conducting any inquiry. So the point is, basically the law has placed various provisions to protect the interest of revenue in case of a self-assessment regime. And the audit is one part of it, very important part of it, which is having the most comprehensive scope, I would say. And then all these proceedings then culminate into demand and recovery by following the due process of adjudication. When I say adjudication, adjudication means issuance of a show cause notice
as to why this amount should not be payable by you, and then we submit our reply, and then department passes an adjudication order in original, which is the first order under which my demand is confirmed. So I will be repeatedly emphasizing on few terms like adjudication, or I would discuss with you that how just by the conclusion of audit, the demand itself does not get confirmed against a person. So let us proceed. So I have discussed with you what is the need for departmental audit. It acts as a deterrent for dishonest taxpayers and encourages compliance amongst honest taxpayers. Yes, with the omission of section 35(5) जो हम chartered accountants GST 9C reconciliation statement prepare किया करते थे, audit करते थे, GST audit हम इसे कहते थे. After doing away with it, the scope of departmental audit has much increased. Now, audit is not a new concept for chartered accountants. Few initial slides I will be taking very fast, as I know that audit has already been discussed multiple times, and we have read the provisions and so on. So audit is not a new concept for chartered accountants. We have been doing statutory audit. We have been doing income tax audit. We have been doing other types of audit like inventory audit, forensic audit, and so on. But audit from the perspective of GST has been defined under the GST law. And the definition is exhaustive. इसके बाहर कुछ नहीं है. जो है इस definition में है. But ये definition का meaning ही बहुत comprehensive है. It means the examination of records, returns, and documents. Any document or any record, whether printed, written, electronic, which is prepared by the registered person under the GST law or even under any other law which is applicable to him. So, income tax audit report or balance sheet prepared under the Companies Act, even the documents prepared under these other laws or any return or record can be examined during the course of audit by the audit officer to verify the correctness of. यहाँ पर correctness verify होती है, whereas when we chartered accountants do the audit, we give a true and fair representation. But यहाँ पे audit party departmental audit जब आपका करता है, वो correctness verify करता है, which is a more precise term of turnover declared, taxes paid, refund claimed, input tax credit availed, and compliance with other provisions of the law. So if there is short payment of tax, non-payment of tax, or you have wrongly availed input tax credit, or there is erroneous claim of refund, then in such cases, department will have to follow the due procedure of adjudication. That is, serve you a show cause notice and then pass an order. So during the audit, the department will detect all these, verify all these. Now, this is section 65, which is the sole provision that governs the departmental audit under GST. 65(1) says that the commissioner has the power to initiate audit, or any officer which is authorized by him has the power to initiate the audit. तो जब भी आपको ADT 1 form आता है जिसमें department pre-intimate करता है, and that has to be served at least 15 days prior to the commencement of audit, वो ADT 1 आपको office of the commissioner के letterhead पर आना चाहिए, which suggests that authorization has been given by the commissioner to conduct an audit against a registered person. By way of a general or specific order, वो या तो ये डायरेक्ट कर सकता है कि मेरी jurisdiction के अंडर जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस करता है, या जो स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा लेते हैं, उनका सबका ऑडिट होगा, या फिर वो स्पेसिफिक ऑर्डर नोटिस इशू कर सकता है in case of a party that they have to be subjected to departmental audit. For such period at such frequency as may be prescribed. Period is generally it can be either a part of the financial year or the whole financial year or multiples thereof. Now, conduct of audit has to be at the place of business of the registered person or the office of the department itself. Generally, we see that in many cases, the department says that you bring your records, you bring your returns, and we will do the audit at our own office. But what we must take out of this is
Apart from these two places, the audit cannot be done anywhere. The department cannot come to your residence and say that we will do the audit unless your residence itself is the place. They have to give me a notice for conduct of audit. There is a time limit for completion of audit. Santoshi, is my voice stable? Because I am getting a notification. Audible, sir. Audible. Audible. So meanwhile, what I do is I will close my video. Or I guess it's working fine now, right? So time limit for completion of audit. अब पुराने लॉ सर्विस टैक्स में क्या होता था, अगर डिपार्टमेंट 2012-13 में ऑडिट स्टार्ट करता था तो 2-3 साल लग जाते थे ऑडिट को कंक्लूड करने में. डिपार्टमेंट 2014-15 में उस ऑडिट को कंक्लूड करता था और बाय द टाइम शो कॉज नोटिस सर्व करने की बारी आती थी, पहले 2-3 साल ऑलरेडी टाइम बार हो गए होते थे. सो यहाँ पे इस चीज को टेक केयर किया गया और ये इंश्योर किया गया कि ऑफिसर ऑडिट कमेंस करने के बाद उसको 3 मंथ्स में कंप्लीट करे, या अगर कमिश्नर को ये लगता है कि ऑडिट 3 मंथ्स में नहीं कंप्लीट हो सकता तो वो एडिशनली 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है. अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि उन्होंने कमेंसमेंट को भी डिफाइन कर दिया कि कब माना जाएगा आपका ऑडिट कमेंस हुआ, जहां से 3 या 9 मंथ्स आपको दिए जाएंगे फॉर दी कंक्लूडिंग दी ऑडिट. तो जब ADT 1 सर्व हुआ और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए उसको आपने डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया, वहां से कमेंसमेंट मानी जाएगी. या डिपार्टमेंट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ गया फॉर डूइंग द ऑडिट, whichever is later will be taken as the date of commencement, and from there the department will get 3 + 6 months for concluding the audit. So this is absolutely clear. Then some things are expected from the registered person who is whose audit shall be taken basically from the auditee, that he should afford necessary facility to the audit party for conducting the audit. He should give proper assistance for timely completion of audit. He should basically afford him necessary facility to verify the books of account and other documents. So after doing all this procedure, findings need to be informed within 30 days from the conclusion of audit. तो ऑफिसर ने कमेंस, ऑडिट आपका कमेंस हुआ जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, 3 मंथ्स में ऑफिसर को ऑडिट कंक्लूड करना है, एंड देन within 30 days from this conclusion he has to give you the findings as well as reasons for those findings and what are the rights and obligations of the auditee. कितना liability उसकी बनती है और अगर वो contest करता है तो आगे कैसे proceed करना होगा, ये आपको उस ADT 2 में inform किया जाएगा after considering the replies, explanations which you have made during the course of audit. If there is any short payment, non-payment, or wrongful claim of input tax credit, or erroneous claim of refund which is detected during the audit, I'm repeatedly saying, by service of audit memo in which audit paras are given that you have done this default, that default, the demand per se does not get confirmed there and then. The department will issue you ADT 2. If you agree to it, pay along with interest. If you do not agree, if you want to challenge, then department has to serve you a show cause notice, which is adjudication, part of adjudication. And only once I have submitted my reply to that show cause notice and department has issued the order, then only the demand gets confirmed. Prior to that, there is no demand confirmed on the assessee. अब समझते हैं कि क्या broad areas हैं for of verification by the department. There are few aspects which regularly come to us as professional, and sometimes we are unaware how to tackle these. Department's perspective is every income credited to your P&L account is liable to GST, as if it is not GST but income tax. So department के हिसाब से सारी income जो आपके recorded है आपके P&L में, they are subject to tax. तो डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करता है, ADT 1 में आपसे आपकी बैलेंस शीट मंगवाई थी, ट्रायल बैलेंस मंगवाया था, अब वो क्रेडिट साइड को रीड करना शुरू करता है, वेरीफाई करता है. तो इन केसेस wherein the registered person is a supplier of goods, he is a manufacturer, he must be very sure about the classification which he has done for his product.
For example, in GST, fruit juice based drink like Appy juice, I'm talking about juice, it is taxable at 12%. But when it becomes Appy fizz, when it is carbonated, it is taxable at 28%. So supplier needs to be very cautious that he is correctly classifying his goods. Otherwise, during the audit, department will pose a great problem. Of course, this 16% additional tax will be demanded from him, and then he will be at the receiving end. Similarly, those who are in printing industry, printers, board has issued a absolute clarity wide circular that if the significance of the content which is being given by the recipient, content is significant. So for example, I as an author give some content to the printer to print and bind it in the form of book and deliver the book to me. He is not supplying me books. He is supplying me printing service because the content which I had given him to him was significant. But when I am giving logo of my firm or CA logo to print on the envelope, and he gives me the envelope, then paper belong to him, ink belong to him, everything belong to him. He's printing it on a paper and making it in the form of envelope and supplying it to me, then it is supply of goods because the content was very minimal. So this board has already clarified these things. So we need the point is we must be very diligent about our classification, what we are supplying. Then whether those clients who are supplying, basically who are supplying two or more supplies together. So for example, a toothbrush with a toothpaste in a single packaging for a single price. If a client is engaged into such business, then we must understand the concept of composite supply and mixed supply. We must be sure that we are paying the correct tax. Toothbrush with toothpaste, both are two different products having two separate uses. So department can come up with a view that it is a mixed supply, liable to tax at the highest rate as per the law. So we need to be sure whether the goods or services we are supplying, if we are bundling them together, then whether it does not fall under the ambit of composite supply or mixed supply. Another example can be, ये गलती कई बार होती है सप्लायर से, फ्रेट, पैकेजिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इस पे वो अपने हिसाब से 18% या कुछ और टैक्स रेट चार्ज कर लेते हैं, whereas the tax rate will be the same tax rate applicable on the supply of goods. Another example can be bed and breakfast, wherein a package has been sold to me for 10,000 per night with complimentary breakfast. I would not discuss the case of 10,000 because in those cases the tax rate is 18% on the bed as well as the breakfast independently as well. But in hotels wherein none of the units sells at 7,500 or more, those hotels are liable to tax on their hotel accommodation at 12% and restaurant at 5%. But when they're selling it for a single price complimentary breakfast, it is a composite supply because it is generally provided by all suppliers like that, and it is advertised as a package. So even the breakfast will get taxed at 12% with input tax credit. So these are the things which we need to be very clear of. Then if we are claiming any exemption, if any exemption is available to me under the exemption notification, say 12/2017, which is applicable in case of services, or in case of goods, notification 2/2017. Supreme Court recently in 2018, in the case of Dilip Kumar and Company, has elaborately held that exemptions need to be read strictly, need to be interpreted strictly, and if there is any ambiguity, then it will go in the favor of revenue but not the assessee. So the person who is claiming the exemption has to satisfy his case. The onus is on him to satisfy that his case falls within the four corners of that exemption notification. So we all know in multiple exemptions have been withdrawn with effect from 18 July 2022 itself after the last council meeting. So in those cases, wherever the exemption has been withdrawn,
or in few cases the exemption has been given, then we must be sure that we are falling under those exemptions. One such example is healthcare industry, wherein a part of the exemption has been withdrawn. Healthcare services are exempt, and since service tax regime they have been exempt, but now they have carved out an exception and say that agar hotel room जो room है, hospital room है, other than ICU, ICCU and those critical care units, जहां पे 5,000 रुपए से exceed होगा per room per day का charge, वहां पे पूरे रूम चार्ज पे टैक्स लिया जाएगा 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो अब यहाँ पे एक और बात आती है. I have a client who had a question कि मेरा पेशेंट एडमिट हुआ 15 जुलाई 2022 को और वो डिस्चार्ज होता है 20 जुलाई 2022 को, इनवॉइस क्रिएट होता है 20 जुलाई 2022 को, तो क्या पूरे रूम चार्जेस पे टैक्स लगेगा अगर मेरा पर रूम पर डे चार्ज 6,000 है? सारे दिनों पे लगेगा? नो. The answer is absolutely clear. Till 17th of July 2022 जो room charge हुआ है, that was exempt. Only with effect from 18th July जो आपने room charge किया है 18, 19, 20 तारीख के लिए, केवल उस पे टैक्स लगेगा. So these are few things when we are claiming exemption. Then another novel concept under GST which has come is cross charge. If an entity is having registration, multiple registrations under a single PAN, then all those registrations within themselves are considered as distinct persons. They are deemed as distinct persons by the law. Section 25.4 and 25.5 of the CGST Act talks about it. अब यहाँ पे आपकी consolidated balance sheet जिसको ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है, वहां पे ये ट्रांजैक्शन उसे नजर नहीं आएगी. कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी. एक जगह एक्सपेंस है, एक जगह इनकम है, या फॉर दैट मैटर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर अ कंसिडरेशन थी ही नहीं. बट आपकी दिल्ली यूनिट ने आपकी अमृतसर यूनिट को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं टू फैसिलिटेट सेल ऑफ दैट यूनिट और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर. तो यहाँ पे अगर कंसिडरेशन दिल्ली यूनिट अमृतसर यूनिट से नहीं चार्ज करता है, तब भी taxable होगा, because it is deemed as a supply even without consideration. So, during the course of audit, if you are registered in multiple states, तो auditor ये GST department को भी बड़ा understood है कि cross charge का concept है, तो वो पूछते हैं कि क्या आपने cross charge किया या नहीं किया for the support services. So in those cases, even I would say if you have not cross-charged till date, then you have second proviso to Rule 28 at your rescue. If you belong to an industry to which credit is available, अगर आपका client किसी exempt business में deal नहीं करता है और उसको credit admissible है, तो दिल्ली यूनिट जो अमृतसर यूनिट से टैक्स चार्ज करती, अगर इनवॉइस इशू करती, तो अमृतसर यूनिट को क्रेडिट मिल जाता, यानी कि सिचुएशन रेवेन्यू न्यूट्रल है. तो सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 28 इन इटसेल्फ सेज कि आप जो भी इनवॉइस पे वैल्यू मेंशन कर देंगे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वैल्यूएशन ऑब्जेक्ट नहीं की जाएगी. तो अगर आप ₹1 का भी इनवॉइस रेज कर देंगे, डिपार्टमेंट कैन नॉट ऑब्जेक्ट इट. सो वेदर यू रेज एन इनवॉइस ऑफ ₹1 और इवन इफ यू डोंट रेज इट, इट डज नॉट मैटर बिकॉज द टैक्स वुड हैव नॉट गॉन टू द गवर्नमेंट. बट हाँ, जहां पर exempt industry है, फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल्स को ले लिया जाए, एंड देयर आर बिग ग्रुप्स जिनका एक हॉस्पिटल दिल्ली में है, दूसरा हॉस्पिटल मुंबई में है, तीसरा हॉस्पिटल उत्तराखंड में है, अगर आपस में कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल भी है और फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्सेबल है, क्योंकि सामने वाली यूनिट को जब क्रॉस चार्ज होगा तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज इन टर्न इट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज व्हिच आर एग्जेम्प्ट. तो इस तरीके से हमें क्रॉस चार्ज का भी बहुत ध्यान रखना है. Then comes valuation aspect of my supplies. Valuation, section 9 says that tax shall be levied on the value of the supply determinable in terms of section 15. अब section 15 क्या कहता है कि जहां पे supplier और recipient are not related, they are unrelated, and price is the sole consideration. केवल monetary terms में कंसिडरेशन चार्ज की गई है,
तो जो प्राइस एक्चुअली पेएबल होगा वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन जो केसेस इस सिनारियो से बाहर फॉल करते हैं, जहां पे कंसिडरेशन इन काइंड भी है, नॉट सोनली इन मनी, या फिर जहां पे रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वहां पे वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद वैल्यूएशन रूल्स होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रूल 28 ऑफ द CGST रूल्स। तो हमें ये चेक करना है कि जो हम वैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट आवर CA इंडस्ट्री इटसेल्फ, मैंने अपने ऑफिस को रेनोवेट कराने के लिए एक आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली। आर्किटेक्ट ने वो सर्विसेज की वैल्यू X थी। मैंने कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं पे करने की जगह मैंने उसे कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दी, टैक्स कंसल्टेंसी दे दी। तो क्या इस सप्लाई पे टैक्स नहीं लगेगा? क्या ये सप्लाई नहीं है? I have supplied consultancy services, he has supplied designing services as an architect. So even no monetary consideration is involved, these supplies are taxable, and the department might not be able to cash these transactions on the face of it because कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा ये, बट कोई एग्रीमेंट मिल सकता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल सकता है जहां पे इसने इस बात को आपने रिकॉर्ड किया हो, एंड देन डिपार्टमेंट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे टैक्स लगेगा, और फेयर मार्केट वैल्यू जो आर्किटेक्ट की सर्विसेज है वो उस पे टैक्स देगा, मुझे क्रेडिट मिलेगा, एंड देन जो मेरी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है इट वुड बी इक्विवेलेंट ओनली, आई हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट वैल्यू। एक और वैल्यूएशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है, जहां पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में उन्होंने 15 सबसेक्शन 2 में उन्होंने ये कहा कि जो ऑब्लिगेशन सप्लायर की थी अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो रेसिपिएंट ने खर्चे इनकर कर दिए, तो वैल्यू में इंक्लूडेबल रहेगा। अब यहाँ पे कई सारी डाइवर्जेंट एडवांस रूलिंग्स आई। मैं आपके साथ इस एग्जांपल को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लैंड है, आप अपने उस पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। अब आप एक बिल्डर हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर आपसे ये कहता है कि अगर मैं विद मटेरियल, विद सीमेंट एंड स्टील ये पूरा काम करके दूंगा टर्न की, तो माय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, लेट अस से सपोज 10 लाख रुपीस। बट मैं उससे ये कहता हूं कि भाई सीमेंट एंड स्टील तो मेरी अपनी क्वालिटी की होगी, मैं ला करके दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर इस काम को 7 लाख रुपीस में कर दूंगा। तो हमारे बीच में ये एग्री हुआ कि सीमेंट स्टील फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ला करके दूंगा, और उसकी सर्विसेज बाकी की रहेंगी सारी, जो भी और मटेरियल लगना है, लेबर लगनी है। हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया फॉर 7 लाख। अब ये जो 3 लाख की फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई मैंने उससे ला करके दी टू इनकॉर्पोरेट इन माय बिल्डिंग सीमेंट स्टील, क्या ये उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। अगर ये उस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता कि वो मुझे टर्न की सप्लाई देगा 10 लाख रुपए में, और सीमेंट स्टील उसने परचेज किया वेंडर से, बट उसकी पेमेंट मैंने डायरेक्टली वेंडर को कर दी, तो मेरा प्राइस एक्चुअली पेबल टू हिम इज 7 लाख रुपीस। यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 7 लाख नहीं होगी, 7 लाख प्लस 3 लाख होगी। लॉ की केवल इंटेंट इतनी है, जहां पे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन वाज ऑफ द सप्लायर बट पेड बाय द रेसिपिएंट, incurred by the recipient। वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो अमाउंट रेसिपिएंट ने पे करी है उसको इंक्लूड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरी ही ऑब्लिगेशन थी कि मैं उसको ला करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी बिल्डिंग में लगाने के लिए, तो उसने मुझे जो सप्लाई किया है वो केवल 7 लाख रुपीस का है, जिसपे टैक्स लगेगा। एंड देयर इज अ वेरी welcome advance ruling on this issue. I have cited, given the citation of this. So that was about valuation. Then time of supply. We need to be very careful. Law says that particularly in case of services this can create a problem. Goods तो जहां supply होते हैं before clearance आप invoice issue कर देते हो और accordingly tax pay हो जाता है, but services के case में because it is not something which is tangible, law says that within 30 days from the date of completion of service आपको invoice raise करना है। and अगर आप उसको deliberately defer करोगे
तो हम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस को कंसिडर कर लेंगे एंड वी विल कंपेयर इट विद द डेट ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, whichever is earlier, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई अक्रू हो जाएगा। तो अगर ऑडिट के दौरान ऑफिसर ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उसकी इनवॉइसिंग को डिले किया है, देन यू कैन बी सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट। When we talk about interest, section 50 subsection 1, we as professionals have all gone through क्या ambiguity है, और अब रूल 88B ला करके उन्होंने फर्दर एक ambiguity क्रिएट कर दी with regards to interest payable on output tax liability। उनका ये कहना, गवर्नमेंट का ये कहना है, लॉ का ये मुझसे द लॉ सेज कि अगर मैंने कोई सप्लाई जुलाई 2022 में की है, उसकी रिटर्न मुझे 20 अगस्त 2022 को फाइल करनी है। अगर मैंने जुलाई की सप्लाई को जुलाई की रिटर्न में रिकॉर्ड करके रिटर्न डिले फाइल की है, से इंस्टेड ऑफ 20 अगस्त आई फाइल्ड इट इन 15th of September, तो मुझे इस डिले पे इंटरेस्ट देना है, बट इंटरेस्ट केवल कैश कंपोनेंट पे देना है, जो लायबिलिटी मैं कैश से डिस्चार्ज करूंगा, नॉट ऑफ क्रेडिट। बट दिस से कि अगर मैंने वो सप्लाई जुलाई की रिटर्न में रिकॉर्ड ही नहीं करी, मेरे से गलती से रह गई, और मुझे ये बात पता चलती है दिसंबर में, और मैं दिसंबर में जाकर के उस सप्लाई को रिकॉर्ड करता हूं, उस पर टैक्स पे करता हूं, तो ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दे आर नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर मैं ऑलरेडी क्रेडिट रिच था ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर मेरे पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्रेडिट है, मैंने इस दौरान कभी भी कैश से पेमेंट नहीं करी, जो भी पेमेंट करी, और मेरे क्रेडिट लेजर में सिग्निफिकेंट बैलेंस है क्रेडिट का, then they are not considering that aspect and saying still you need to deposit interest on the gross liability, which in my understanding, if we go by the judgment of Supreme Court in the case of Pratibha Processors versus Union of India, wherein the Supreme Court went on to say that interest can only be levied on the component, cash component, by which the government has been deprived. Interest किस चीज पे लगता है? Interest किसी के पैसे को यूज करने पे लगता है। जो क्रेडिट मेरे क्रेडिट लेजर में पार्क्ड है, वो तो सरकार को ऑलरेडी मेरे सप्लायर ने जमा कर दिया है, तब मुझे क्रेडिट मिला है। Again, a judgment Eicher Motors versus Union of India or the Aichi Karkaria, all by the Supreme Court, wherein they say that credit is as good as tax paid. तो जब टैक्स पे हो गया था, जुलाई में मेरे पास क्रेडिट पड़ा था, मैं वहां की सप्लाई को रिकॉर्ड करना भूल गया अपनी रिटर्न में, और दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्रेडिट मेंटेन है बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, तो मेरे पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। बट दिस इज नॉट व्हाट लॉ सेज, एंड यू विल हैव टू कंटेस्ट दिस इशू till as favorable judgment comes. Then place of supply, I have considered a supply as interstate supply whereas it was intrastate supply, or vice versa। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लॉ आपको टेक केयर करता है, सेक्शन 77 ऑफ द CGST एक्ट और द SGST एक्ट रेड विद 19 ऑफ द IGST एक्ट। आपको जो गलत टैक्स आपने पे किया है उसका रिफंड मिल जाएगा, पहले आप सही टैक्स पे करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आप पे कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको सही टैक्स पे करना है, आपको गलत टैक्स का रिफंड मिल जाएगा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स। सो दिस इज अबाउट इट। जिन केसेस में 2 years की टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगी, दोज कैन बी कंटेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 265 व्हिच सेज दैट गवर्नमेंट कैन नॉट रिटेन एनी अमाउंट एज टैक्स which is beyond the authority of law। जो गलत टैक्स दिया गया, that was beyond the authority of law and that can be claimed back। Then change in rate of tax। अब यहाँ पे ये 18 जुलाई को ये क्वेरी कई बार आई, सेक्शन 14 का एप्लीकेबिलिटी समझ में आई। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जब गवर्नमेंट को प्रोवाइड होती थी, 17 जुलाई तक 12% पे टैक्सेबल थी, 18 जुलाई से रेट 18% हो गया। अब मेरे एक केस में क्लाइंट का फोन आता है कि भाई मैंने सप्लाई तो कर दी 17 जुलाई 2022 तक, मैं वर्क को मेजर कर सकता हूं, बट बिलिंग मैं 25 जुलाई से पहले नहीं कर सकता, मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। ही वाज आस्किंग मी दैट क्वेरी ऑन 25th of July, और पेमेंट भी बाद में आएगी, तो क्या मैं 17 जुलाई तक किए गए काम पे 12% अप्लाई कर सकता हूं? कॉन्ट्रैक्टी का कंसल्टेंट ये बात कह रहा है। तो आई सेड दैट यू गो बैक टू दैट कंसल्टेंट and ask him to read section 14
which simply overrides the provisions of section 12 and 13, which talk about time of supply in general scenario. Section 14 says it is a thumb rule. अगर कट ऑफ डेट के बाद 2 इवेंट हुए हैं तो नया रेट लगेगा, उससे पहले 2 इवेंट हुए हैं तो पुराना रेट लगेगा. You have to check out of 3 events. If the majority is falling after the cutoff date, it will be new rate. If majority is falling before that cutoff date, the old rate will be applicable. What are those 3 events? Date of completion of supply, date of issuance of invoice, and date of receipt of payment. तो उनके केस में क्योंकि सप्लाई तो 17 जुलाई तक हुई थी, बट पेमेंट भी बाद में आई और इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ. 2 events falling after the day cutoff date, 18% would be applicable. ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं. अगर उन्होंने 12% डिस्चार्ज करके बिल रेज कर दिया होता तो 6%, जब डिपार्टमेंट 3 साल बाद ऑडिट करता तो वो इंटरेस्ट के साथ अप्रोक्सीमेटली 150 टाइम्स 1.5 टाइम्स हो चुका होता. एंड पेनल्टी डिपार्टमेंट अलग लगाता है, आपको पता है, दो दैट कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड. Then, as I was saying in the beginning, department sees every income from the eye that it is liable to GST. Sundry creditors written off. मेरे कुछ क्रेडिटर्स थे जिनसे मैंने सप्लाई ली थी. अब वो क्रेडिटर्स पेमेंट लेने नहीं आए, 3-4 साल बाद मैं उसे राइट ऑफ कर रहा हूं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन एक्ट. तो क्या वो सप्लाई बन जाएगी ऑटोमेटिकली? बट डिपार्टमेंट कहता है कि ये जीएसटी के इस पे जीएसटी लगेगा. बट बाय सेइंग ऑफ द डिपार्टमेंट इट डज नॉट गेट टैक्सेबल अंडर जीएसटी बिकॉज इट इज नॉट अ सप्लाई. यू हैव जस्ट रिटन ऑफ द क्रेडिटर्स. सप्लायर वो था, मैं तो रेसिपिएंट था. वो मुझसे पेमेंट लेने नहीं आया, मैं तो जस्ट पेमेंट राइट ऑफ कर रहा हूं. हाउ आई हैव मेड अ सप्लाई टू हिम. सो दिस इज द केस. देन 4 फीचर्स. लिक्विडेटेड डैमेजेस. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लॉज होता है. एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टी ने कहा कि आप मेरी इस लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दीजिए विद इन पीरियड ऑफ 2 years. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 24 months मैं आपसे प्यूरेटिव डैमेजेस चार्ज करूंगा या आपकी कंसिडरेशन जो मुझे पे करनी है उसमें से डिडक्ट कर लूंगा. तो इस तरीके के डैमेजेस पे क्या मेरे हैंड्स में जीएसटी लग जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्टी के हैंड्स में जीएसटी लग जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर हिम? So this issue was already settled in service tax by a number of judgments passed in 2021, and yesterday night the department has come up with a very welcome circular. It is a detailed, elaborated circular of 11 pages. Even I have not been able to go through it in detail, but prima facie it professes the view taken by the judgments, particularly of CSTAT Delhi, wherein this justice has very beautifully elaborated that there is a difference between a consideration for a contract and condition to a contract. Contract हुआ था, that contractor will provide services to contractee for an X amount, which have been taxed, which have been offered to tax. अब contract के breach होने पर अगर कोई damages impose किए जाते हैं, they are just condition to a contract, and you cannot tax condition to a contract. You can only tax consideration for a contract. So इसके लिए कई सारे आर्ग्यूमेंट्स और भी हैं. बाय जस्ट डिडक्टिंग दोज डैमेजेस आई हैव नॉट मेड एनी सप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर. आई वाज द रेसिपिएंट, ही वाज द सप्लायर. डिपार्टमेंट सेज दैट दिस इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट. बट कल जो सर्कुलर उन्होंने निकाला है उसमें यही कहा है कि एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट में नॉन कंपीट एग्रीमेंट्स के ही नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे. या एक लेट अस से होटेलियर है, he has purchased a land and on which he will construct a hotel, a 5-star hotel, और उसके सामने एक ऐसी लैंड है जो कि जिसपे एक आदमी ने अपना कुछ खराब सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उसको तोड़वाने के लिए अगर वो उसे कोई कंसिडरेशन देता है then that is agreeing to the obligation to tolerate an act. वहां पे एग्रीमेंट पर से केवल इसी काम के लिए हुआ है और कंसिडरेशन इसी के लिए चार्ज दी गई है. तो इस तरीके से. देन अगेन एग्जांपल इज नोटिस पे रिकवरीज. यहाँ पे भी डिपार्टमेंट कहता है कि जीएसटी लगेगा अगर एम्प्लॉयर ने कुछ नोटिस पे रिकवर किया है तो एम्प्लॉय से. ही हैज टॉलरेटेड द एम्प्लॉइज एक्ट.
but this was settled by GET&D Madras High Court that employer has not provided any service to the employee. He has facilitated the sudden exit of the employee, for which he has recovered a compensation. It is not a consideration for provision of a service. और कल जो circular आया है उसमें ये aspect भी cover है. 179 circulars have been issued till date. गवर्नमेंट की क्लियर इंटेंशन है कि लिटिगेशन कम से कम हो. इतने सर्कुलर 10 साल में सर्विस टैक्स में नहीं इशू हुए थे. सो notice pay recoveries, liquidated damages, everything has been covered in the circular number 178. Now, another thing is, just few days back, I got a call from a client. He said, suppose he deals in motorbikes. He is a dealer of motorbikes. Manufacturer ने motorbike supply करी, dealer ने manufacturer को GST pay किया, क्रेडिट लिया, आगे जो सेल की उस पे GST दिया. Now when he has achieved the target, तो मैन्युफैक्चरर उसे एक डिस्काउंट दे देता है थ्रू अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. जो एक बाइक लेटेस्ट से 1 लाख रुपीस की थी और उसने 50 बाइक सेल कर दी, तो मैन्युफैक्चरर उसे पर बाइक 10,000 रुपीस का डिस्काउंट दे देता है. वो उसकी इनकम में रिकॉर्ड हो जाता है. अब GST डिपार्टमेंट कहता है इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. Now, department is not appreciating that this is not a supply which has been made by the dealer to the manufacturer. It is simply a purchase discount. टैक्स 1 लाख रुपए की सेल पे जा चुका है, आगे 1,10,000 पे जा चुका है. अब डिपार्टमेंट कहता है कि उस परचेज डिस्काउंट पे भी GST दे दो. So, in such cases, we will have to contest it, and it is certain that these cases, the taxpayer will win, the assessee will win, because there is no underlying supply by the dealer to the manufacturer. Then, अब ये सर्विस टैक्स में काफी होता था जब डिपार्टमेंट के लिए पीरियड टाइम बारिंग हो जाता था. अब GST में भी आगे आने वाले टाइम में होगा कि केवल ये कह करके कि बैलेंस शीट में 1 करोड़ टर्नओवर है और ST3 रिटर्न्स में 90 लाख रिकॉर्डेड है. वो डिमांड प्रपोज कर देते थे विदाउट हैविंग एनी एलिगेशन अबाउट व्हाट सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड एंड हु इज द सर्विस रेसिपिएंट. दे डिड नॉट एस्टैब्लिश दिस. Such type of SCNs go on the face of it. When one such matter, this was in the case of Deltax Enterprises, again one more is MP Lagu. There are a number of judgments wherein they have established, the courts have laid that unless and until department has been able to specifically allege in the show cause notice कि ये सर्विस प्रोवाइड की गई है और ये सर्विस रेसिपिएंट है, डिमांड कंफर्म नहीं हो सकती. डिपार्टमेंट केवल ये नहीं कह सकता कि बैलेंस शीट में X अमाउंट रिकॉर्डेड है, ST3 रिटर्न्स में लेसर देन X अमाउंट रिकॉर्डेड है, तो आप पे टैक्स लग जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. Deltax Enterprises was very interesting case wherein they had inflated their sales. It was an admitted income under income tax, and then they inflated their sales to get loans from bank. But when service tax department demanded service tax on that income, the tribunal very clearly said that unless the department is able to establish that any service has been provided in lieu of that inflated revenue, there can be no service tax. Then foreign exchange fluctuations gains, again this is regarded as income, but as there is no underlying supply, there cannot be any GST. Then GSTR 1 versus 3B. अभी तो जो audits हो रहे हैं, department भी अभी nascent stage पे है law को समझने के लिए, तो वहां पे उनके simple allegations है 1 versus 3B, 2A versus 3B, 2A versus 3B I will discuss with you. तो केवल 1 versus 3B के cases में आपको अपनी factual submission देना चाहिए कि इसलिए ये डिफरेंस आया है, कोई इनएडवर्टेंट एरर है, डेटा एंट्री एरर है, और इसके बेसिस पे मेरी डिमांड कंफर्म नहीं की जा सकती. देन कुछ केसेस एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज के केस में आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है कि जहां पे सर्विस रेंडर कर दी गई है फॉरेन एंटिटी को बट पेमेंट नहीं आई है विद इन 1 ईयर. इन सच केसेस वी वर as consultants to these clients, we must tell them that if after 1 year they have not been able to receive foreign convertible exchange as consideration in lieu of those services, then they must apply for condonation before the commissioner.
or in cases where there is neither any supply has been made nor there is any expectation of receipt of payment. In those cases, it can be contested that no supply per se has been made. But in cases where the supply has been made and the payment is pending, then you will be subjected to tax unless and until you apply for condonation and at later stage you get the payment. लॉ तो केवल ये कहता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी से एक्ट सेज कि पेमेंट आनी चाहिए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, कोई टाइम लिमिट नहीं है. बट रूल 96 में उन्होंने टाइम लिमिट 1 ईयर की रिस्ट्रिक्शन की हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिसीव दैट पेमेंट विद इन 1 ईयर तो आपको कॉन्डोनेशन अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज यू आर लायबल टू टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. दो even if I would say that you have not applied for condonation, but the payment has been received ultimately, even after 2 years, it qualifies as export and you will be entitled for refund. अब ये हुआ क्रेडिट साइड ऑफ P&L जो मैंने डिस्कस किया. अब डेबिट साइड को डिपार्टमेंट किस एस्पेक्ट्स में वेरीफाई करता है? सबसे पहले आपका क्रेडिट चेक होता है कि आपने जो क्रेडिट लिया है that is in accordance with section 16(1) or not. As per section 155 of the CGST Act, the burden of proof is on the registered person who has claimed the credit to prove that he has satisfied all the conditions which are there under the law for claim of credit. The onus is on the person who is claiming the credit. This is very important, section 155. So then section 16 subsection 2 में 4 conditions हैं credit लेने के लिए. With effect from 1st of January 2022, उन्होंने एक कंडीशन और डाल दी, इनवॉइस पोर्टल पे अपलोडेड होना चाहिए बाय द सप्लायर एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 37 व्हिच इज GSTR 2B. 1 जनवरी 2022 से पहले की अगर सिचुएशन पे बात करें, यहाँ मैं 2A वर्सेस 3B के एस्पेक्ट पे बात करूंगा आपसे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डिपार्टमेंट डिमांड प्रपोज कर रहा है, जहां इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स हैं, असेसी एग्री कर लेते हैं, आई वुड नॉट कमेंट अबाउट दैट. बट जहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट है, आपने अपने सप्लायर को ड्यूली टैक्स पे कर रखा है, आपने सर्विसेज ली हैं, गुड्स खरीदे हैं, आपके पास गुड्स और सर्विसेज पोजेशन में हैं, यू हैव रिसीव्ड देम, देन इन केसेस वेयर यू हैव द सप्लायर हैज पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट, आप उससे सर्टिफिकेट लें और अपने केस में सबमिट करें कि देयर इज नो कंडीशन अंडर द लॉ कि मेरा क्रेडिट 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए. कहाँ है? कहीं भी पूरे लॉ में कंडीशन नहीं है. पहली बार जब कंडीशन आई थी वो रूल 36(4) में 1st of October 2019 ऑनवर्ड्स आई थी, 10th of October 2019 ऑनवर्ड्स. उससे पहले लॉ में तो कभी भी कोई कंडीशन नहीं रही 31 दिसंबर 2021 तक, और 1 अक्टूबर 2019 से पहले रूल्स में भी कोई कंडीशन नहीं थी. Rules are delegated legislation which cannot travel beyond the statute. इसीलिए उन्होंने रूल को 36(4) जैसे रूल को एक स्टैट्यूटरी पावर देने के लिए सेक्शन 16 टू AA इंसर्ट किया, बट वो इंसर्ट हुआ 1 जनवरी 2022 के बाद. तो उससे पहले के जो केसेस हैं वहां पे आपका क्रेडिट नहीं डिनाई होना चाहिए, वहां पे आपको उसे कंटेस्ट करना चाहिए जहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व है. इसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि आपने जो क्रेडिट अवेल किया है वो लॉ की सारी कंडीशंस को अबाइड बाय करके लिया है. देन सुप्रीम कोर्ट इन भारती एयरटेल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, पोर्टल इज ओनली अ टूल टू रिट्रीव एंड फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन. आपको आईटीसी को सेल्फ असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. देन देयर इज अ डॉक्ट्रिन that lex non cogit impossible. You cannot expect an assessee to do an impossible task. आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गुड्स और सर्विसेज रिसीव करूं, टैक्स इनवॉइस मेरी पोजेशन में हो, मैं अपनी रिटर्न्स भी प्रॉपरली फाइल कर रहा हूं, उसके अलावा आप ये भी इंश्योर कराना चाहते हैं कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न ठीक फाइल कर दी हो ताकि मेरे 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाए. तो दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर मी. देन you cannot deny me that credit without inquiring the supplier D.Y. Bethel. You all have read these case laws. Then Article 300 of the Constitution of India, which says that credit cannot be denied. A person cannot be deprived of his property except by the authority of law.
authority of law has come with effect from 1st of January 2022. Prior to that, there was no law which said that credit will be restricted to auto population in 2A, 2B. So you cannot deprive me of that input tax credit. So arguments have to be placed. And these arguments, I am sure it will not be accepted by the audit party. It is a very lower level. You will have to contest it till the, at least till the tribunal. And even if I were to discuss about this 16(2)AA, which has come up with effect from 1st of January 2022, I would say that this is applicable, not applicable in every case or genuine cases wherein the buyer is bona fide buyer, he has genuinely purchased the goods or genuinely procured the services from the supplier. The supplier has also paid the tax and the government has got the tax, but just because it is not auto-populating in 2A, 2B, credit cannot be denied. If the tribunal is not able to give the relief, then the high courts will come and give the relief. In Delhi High Court Arise India case, High Court has went on to say that even if the VAT is not deposited by the selling dealer and department is not able to establish any connivance between dealer and buyer, the buyer cannot be denied the credit. चाहे supplier ने VAT जमा नहीं भी कराया, तो भी buyer को credit मिलेगा if buyer is under bona fide impression and department is not able to prove connivance between the two. ये VAT में जजमेंट है, वहां पे भी सिमिलर प्रोविजन होता था सेक्शन 92G. यही एनालॉजी GST में भी कंटिन्यू करेगी. So this was very important to be discussed to be and the issue which is coming in audits. यहाँ पे Mr. Shivam had raised his hand. I would ask him to unmute and ask the query. Yes, Brahma. Shivam? I think Shyam Agarwal raised his hand. Sorry, I could not get you. The voice is not clear. I think Shyam Agarwal जी ने अपना हैंड रेज किया, उनको अनम्यूट कर देना. हाँ जी, उन्हें आप अनम्यूट कर दें. Shyam जी, you are unmuted, Shyam जी. I would rather continue. At last, we can take up his query. Yes. It's not there. So, this was about 2A, 2B versus 3B. Then we must be sure that we have claimed the credit within the time limit given by section 16(4). But particularly in cases of RCM, अब मुझसे कुछ reverse charge का tax जमा कराना रह गया और audit में भी वो पता चलता है. So I should upfront pay it and then claim the credit. Section 16(4) की limit, in my view, will not apply wherein tax is discharged under RCM. Because in this case, I am entitled for credit only once I have paid the tax. Then block credits under section 17(5). This also department is meticulously verifying. अब यहाँ पे कुछ issues हैं. Immovable property versus plant and machinery. Plant and machinery का credit आपको मिलता है, but immovable property construction का आपको credit denied है. Whether you have bought the goods and labor separately or whether you have availed works contract services in relation to construction of immovable property, credit is denied. But yes, we have Safari Retreats, Orissa High Court, which says वहां पे एक मॉल ओनर ने एक पिटिशन फाइल करी कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन की है उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए. दैट कैन नॉट बी डिनाइड टू मी. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(5) कैन नॉट बी रेड विद सच वाइड इंटरप्रिटेशन. मैं इस मॉल को बना रहा हूं टू फर्दर लेट आउट शॉप्स इन इट और उस पे GST जाएगा तो मुझे कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट मिलना चाहिए. एंड ओडिशा हाई कोर्ट रूल्ड इन हिज फेवर. नाउ द डिपार्टमेंट इज इनटू अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट and only in the times to come we will have to see what the decision ultimate outcome is. But till that date
in case of mall owners or hotel accommodation service providers or such commercial establishments which are ultimately used as the main tool for providing the supply on which GST is paid. In my humble opinion, such service suppliers should claim the credit but do not utilize it. They should park it in their electronic credit ledger, and tomorrow after the judgment of the Supreme Court comes, if it is in favor, you can utilize it, and if it is against, you can reverse it without any interest because you have not utilized it. क्रेडिट में और क्या इश्यूज आ सकते हैं? प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है, सीबीआईसी ने, बाय वन गेट वन ऑफर में आपको कोई क्रेडिट रिवर्सल की जरूरत नहीं है. बेसिकली यू आर सेलिंग टू कमोडिटीज एट द प्राइस ऑफ वन and you are entitled for the credit. It is not a gift. Gift is unconditional. But यहाँ पे condition associated है कि आप एक purchase करेंगे तभी दूसरा मिलेगा. So it is not gift. It is not free. So credit is admissible. Then stationery dealer. Let us say someone is a stationery dealer. On his son's birthday, he gifts a pen from that stationery to his son. तो उस केस में वो gift है, out of love and affection है, वहां पे आपको credit disallow होगा. रिवर्सल ऑफ कॉमन आईटीसी का हमें ध्यान रखना चाहिए. अगर मैं ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे मेरी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज दोनों हैं, या मैंने अपनी इनवर्ट सप्लाईज को फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस दोनों के लिए यूज किया है, तो कॉमन क्रेडिट का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होता है. इवन इफ इन अ एंटिटी इन लेट अस से इट इज डूइंग एनी बिजनेस, फॉर एग्जांपल अ होटेलियर इटसेल्फ, बट it is investing the idle funds and earning income out of it, earning from securities, then that income is not taxable under GST. But common credit needs to be reversed in that proportion as per section 17(2) read with rule 42 and 43. यहाँ पे लास्ट जो काउंसिल मीटिंग के बाद डिसीजन आए, उसमें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को रूल में अमेंड करके एक्सक्लूड कर दिया गया है कि मैं अगर एक्सपोर्टर हूं और मुझे क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है, मैं उनको सेल कर देता हूं, विच इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो मुझे उस सिनारियो में कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है. 2(2)(b) reconciliation I have already discussed with you. Interest on ITC availed and utilized. जब तक आप यूटिलाइज नहीं कर लेते, आप पे इंटरेस्ट नहीं लग सकता इन गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट पे. ये लॉ में अमेंडमेंट हो चुकी है. इट इज अ वेरी वेलकम अमेंडमेंट, और रूल 88B में इसी की लाइन में अमेंडमेंट कर दी गई है. इंसर्ट करके उन्होंने यही कहा है कि जब तक यूटिलाइज नहीं कर लेते आप आईटीसी, तब तक आप पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा. अब डेबिट क्रेडिट साइड को हमने डिस्कस कर लिया. इसके अलावा और क्या हो सकता है बैलेंस शीट में? योर फिक्स्ड असेट रजिस्टर. फिक्स्ड असेट रजिस्टर में जो डिस्पोजल्स हैं, they are liable to GST. तो डिपार्टमेंट चेक करेगा आपने जीएसटी पे नहीं किया है या नहीं किया है. कैपिटल गुड्स के केस में पर्टिकुलरली सेक्शन 18(5) का हमें ध्यान रखना चाहिए, which says कि आपको टैक्स देना है ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर. मतलब 20% की डिप्रिसिएशन आपको दे दी उन्होंने क्रेडिट पे पर एनम. अगर आपने मशीनरी 1 करोड़ की परचेज करी और 3 साल बाद सेल कर दी फॉर 10 लाख रुपीस, तो आपको 10 लाख पे टैक्स नहीं देना है. आपको 3 साल की डिप्रिसिएशन 20% के हिसाब से कंसिडर करके जो WDVI एसेट की 40 लाख रुपीस, जो 40 लाख से प्रोपोर्शनेट आपने क्रेडिट लिया था 18%, 7,20,000, आपको वो डिस्चार्ज करना है. So 18(5) needs to be taken care of. सेल ऑफ मोटर व्हीकल. अगर कोई गाड़ी आपने परचेज कर रखी है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बट क्रेडिट नहीं मिलता, 17(5) में ब्लॉक्ड है, लेकिन आप उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो इन केसेस में आपको गाड़ी की सेल पे भी टैक्स देना है, बट वो टैक्स आपको देना है मार्जिन पे, विच इज कैलकुलेटेड एज सेल प्राइस माइनस WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो अगर मार्जिन है तो टैक्स देना है, नहीं तो नहीं देना है. और रेट भी कंसेशनल है. रेगुलर जो कार्ड्स पे रेट लगता है वो नहीं है. इट इज कंसेशनल रेट ऑफ 12% ऑन स्मॉल कार्ड्स एंड 18% ऑन बिग कार्ड्स. आप उसकी स्पेसिफिकेशन स्मॉल और बिग का जो डिस्टिंक्शन है वो नोटिफिकेशन 8/2018 में
वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम. रेनोवेशन ऑल्टरेशंस टू बिल्डिंग टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड, जो मैं रेगुलर रेनोवेशन एंड ऑल्टरेशन अगर अपनी कोई ऑफिस में कराता हूँ, कहीं भी किसी भी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कराता हूँ, टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज का नहीं मिलता है, बट जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है उसका क्रेडिट आपको मिलता है. इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वहां से डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सकता है. अगर कोई आउटफ्लो इन फॉरेन करेंसी जो रिपोर्ट होता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको जरूर डिटरमाइन करता है कि आपने आरसीएम पे टैक्स पे किया है या नहीं पे किया है. सिमिलरली ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज में डिपार्टमेंट असरटेन करता है कि इवन विदाउट कंसिडरेशन दे आर टैक्सेबल. अगर कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी है एक ग्रुप कंपनी की, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को, तो even without consideration department is deeming it as supply and liable to tax. Though an alternate view can be that this corporate guarantee is not being given in the course of business of the guarantor, but only to protect his investment in the company for which guarantee has been given to the bank. So is तरीके से these are some issues. Then रिवर्स चार्ज डेबिट साइड ऑफ P&L जब हम डिस्कस कर रहे थे, ये रह गया था, मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं. सॉरी 1 सेकेंड. हाँ जी, P&L अकाउंट को जब वेरीफाई करता है डिपार्टमेंट, तो ये भी चेक करता है कि आपने कोई जैसे लीगल एंड प्रोफेशनल का एक्सपेंस डेबिटेड है, तो वो पूछेगा कि एडवोकेट को कितना एक्सपेंडिचर पे किया है, उस पे आरसीएम पे किया है या नहीं किया है. फ्रेट में जीटीए का कितना कॉम्पोनेंट है, उस पे आरसीएम पे टैक्स पे किया है या नहीं किया है. स्पॉन्सरशिप एक्सपेंस में कुछ अमाउंट डेबिटेड है, वहां पे आपने एज अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो आरसीएम पे टैक्स पे किया है या नहीं किया है. ये सब चीजें डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है. नाउ नॉट गोइंग इनटू दिस, बट एम्फसाइजिंग कि अगर नहीं पे किया है तो क्या आपके पास ग्राउंड्स है. अगर आपको क्रेडिट एडमिसिबल था, अगर जब आप पे करते, तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के केस में जेट एयरवेज का केस लॉ है by the Mumbai Tribunal, which has been subsequently affirmed by the Honorable Supreme Court, wherein they say कि जहां पे रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है, especially in case of reverse charge, wherein the person who pays the tax gets the credit simultaneously, in cases में डिमांड कंफर्म नहीं की जा सकती. And then they have also said कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के केसेस में एक्सटेंडेड पीरियड भी इन्वोक नहीं किया जा सकता. इस पे मैं I will throw light on what is normal period and extended period in the subsequent slides when we will come to adjudication. Then आपने जो रिफंड्स क्लेम किए हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंट आपके रिफंड्स की एलिजिबिलिटी को एग्जामिन कर सकता है, आप कि आपने ठीक रिफंड लिया है या नहीं लिया है. यहाँ पे इन सम केसेस इनिशियली ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में जो एक्सपोर्टर्स थे उनको कैपिटल गुड्स का कई केसेस में रिफंड मिल गया है. तो अब डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ये डिटेक्ट करता है तो वो आपको शो कॉज नोटिस सर्व करेगा. बट एक अच्छी बात ये है कि पीछे जो रूल में 86 में अमेंडमेंट आई है आफ्टर द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस रिफंड को आप पे बैक कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो आपको हम इस अमाउंट को जो कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट था उसको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रीक्रेडिट कर देंगे. देन ट्रैन 1 में जो आईटीसी आपने लिया है उसको भी डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. जहां पे रिटर्न्स का क्लोजिंग बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वहां पे डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां पे आपने इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट लिया है जो पहले क्रेडिट नहीं मिलता था, इन सर्टेन केसेस सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में जो कवर्ड थे, वहां पे डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को. ट्रैन 1 से रिलेटेड एक अपडेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है फ्रॉम 1st of September ट्रैन 1 विल बी रीओपन्ड फॉर एवरीवन, बी इट दैट पर्सन हैज फाइल्ड एनी पिटीशन और नॉट. सबके लिए ओपन होगा 2 महीने के लिए. 31 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा और आप अपना ट्रैन 1 में क्लेम फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा प्रोसीजरल कंप्लायंसेस को भी डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है whether you have properly maintained the accounts or not as per section 35 of the act. इन केसेस में कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा तो आप पे जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है अंडर सेक्शन 125 which is not more than 50,000 cumulatively under CGST and SGST. Then और
कुछ क्रिटिकल इश्यूज जो ऑडिट में हैं विच आई वुड लाइक टू एड्रेस। जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, सपोज ऑडिट में आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन की डिपार्टमेंट ने, आपने एक पर्टिकुलर सप्लाई को एग्जेम्प्ट ट्रीट कर रखा था या लोअर रेट पे ट्रीट कर रखा था, बट डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, इस पे टैक्स बनता है और हायर टैक्स रेट बनता है, तो क्या उस टाइम पे आप अपने रेसिपिएंट से रिकवर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। That will solely depend upon the commercial arrangement between the two parties. Department is least bothered with it. हाँ, अगर आप डेबिट नोट के थ्रू उस रेसिपिएंट से उस अमाउंट को चार्ज कर लेते हैं, उस जीएसटी को चार्ज कर लेते हैं, तो उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये लॉ में कहीं भी डिनाइड नहीं है। एंड रिसेंटली एन एडवांस रूलिंग हैज आल्सो कम इन फेवर ऑफ इट। सेक्शन 17(5) में इस 74 के अंडर जो कोई टैक्स रिकवर किया गया है उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, बट 73 के अंडर कोई टैक्स रिकवर किया गया है, यानी कि ड्यूरिंग द ऑडिट जनरली फ्रॉड नहीं डिपार्टमेंट सस्टेन कर सकता अपने एलिगेशन को, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा। आप अपने रेसिपिएंट से क्रेडिट क्लेम जीएसटी क्लेम करें और वो उसको क्रेडिट लेने दें। देन whether audit party can seize any goods or documents or records from you, no, there is no power under section 65 which confers basically which entitles them to seize my goods. अगर उनको ऐसा कोई reason to believe है कि कोई मैं wrong practices में indulging हूं, तो उन्हें फिर inspection under section 67 separately invoke करना पड़ेगा, but under during the course of audit per se they cannot seize anything from me. ऐसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक या कैश नहीं हो सकता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट एंड सर्च कैन बी कंडक्टेड कॉन्करेंटली। दिस हैज बीन हेल्ड बाय in one of the judgments by the High Court. I guess I have done there's a typographical error while mentioning the citation, but yes, there is a judgment by the High Court which says that during the course of audit, if department gets basically if a department observes something and they have a reason to believe that some important information is secreted in a place, or goods which are liable to confiscation are secreted in a place, basically any case which is liable for search and seizure, anything like that is happening during the course of audit, if they come to know about such thing, then they can simultaneously after getting due approval from the joint commissioner, they can do the search. Apart from this, this is prior approach to departmental audit. I would circulate the PPT for this. I will not go into it. It is not that important. I will come to more important slides due to the paucity of time. हाँ, अब जब मैं एजुडिकेशन की बात करता हूं, देखिए आपका डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया अंडर सेक्शन 65, आई एम रिपीटेडली सेइंग कि डिमांड यहाँ पे अभी ना तो ओके सर, सिंस हाउ मच टाइम? अब ठीक है? सर अब ठीक है। अभी सर वहां पे मैं कंटिन्यूअस नहीं करें। ओके, शुड आई कंटिन्यू? अभी ठीक है? यस यस परफेक्ट। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे समझेंगे कि ऑडिट कंक्लूड होने के बाद जो मेरे को फाइंडिंग्स डिपार्टमेंट ने दी अपनी, उसके बाद अगर मैं उनको अग्री नहीं करता तो डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस सर्व करना है। शो कॉज नोटिस सर्व करने के लिए लॉ में एक टाइम लिमिट है, और उसको ऑर्डर पास करने के लिए उसके अगेंस्ट भी एक टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेक्शन 73 में है और एक सेक्शन 74 में है। 73 में लॉ कहता है कि वेयर टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, or tax has been erroneously refunded, or input tax credit has been wrongly availed for reasons other than fraud, willful misstatement or suppression of facts, तो 73 impose होता है। 73 में टाइम लिमिट है 3 years from the due date of annual return। अब 17-18 का जो एजुडिकेशन होना था वो 30 जनवरी 2023 तक होना था, क्योंकि जो ड्यू डेट थी एनुअल रिटर्न की वो 30 जनवरी 2020 थी, बट उन्होंने लास्ट काउंसिल मीटिंग में इसको एक्सटेंड कर दिया
30 सितंबर 2023 तक उन्हें ऑर्डर इन ओरिजिनल पास करना है और मिनिमम 3 महीने पहले यानी कि 30 जून 2023 तक उन्हें शो कॉज नोटिस सर्व करना है। तो शो कॉज नोटिस 30 जून 2023 तक ही सर्व करना है फॉर एनी डिमांड पर्टेनिंग टू 2017-18। अब होता क्या है कि ये सेक्शन 73 है फॉर अदर देन फ्रॉड, बट डिपार्टमेंट इन एवरी ऑडिट, in every show cause notice which I have seen in service tax regime, it says that had the audit not been conducted, the person would have evaded tax. There is willful suppression of facts, there is misstatement of facts with an intention to evade tax, and there is fraud and this and that. तो डिपार्टमेंट हर केस में यही अलेज करके एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक करता है। उसके दो बेनिफिट होते हैं डिपार्टमेंट को, एक तो उन्हें 3 साल की जगह 5 साल की टाइम लिमिट मिलती है, यानी कि शो कॉज नोटिस 30 जनवरी 2025 तक इशू हो सकता है, और 30 जनवरी 2025 तक ऑर्डर इशू हो सकता है, शो कॉज मिनिमम 6 महीने पहले इशू करना है वहां पे। तो 30 जुलाई तक आपका शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, 30 जुलाई 2024। डिपार्टमेंट हर केस में ये कहता है। अब एज कंसल्टेंट्स, एज प्रोफेशनल्स, एज कंसल्टेंट्स टू आवर क्लाइंट्स, हमारी हेल्प क्या हो सकती है क्लाइंट को, कि जो डिमांड अगर एक्सटेंडेड पीरियड में इन्वोक की गई है, 74 में शो कॉज नोटिस आया है, 73 की टाइम पीरियड खत्म हो चुका था, बट डिपार्टमेंट ने 74 अप्लाई करके एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का बेनिफिट लिया है, और 74 में ऑटोमेटिक इट कम्स विद 100% पेनल्टी। 73 में रीजन ऑफ फ्रॉड नहीं है तो मैक्सिमम पेनल्टी 10% है, बट डिपार्टमेंट हर केस में एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक करता है, एलिगेशन ऑफ फ्रॉड लगाता है और 100% पेनल्टी इंपोज करता है, प्रपोज करता है। तो एज कंसल्टेंट्स आवर हेल्प शुड बी दैट देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड लॉ that any mere identification of non-payment of tax during the course of audit in itself does not amount to fraudulent intention to evade tax. मैंने केवल एक सप्लाई को डिक्लेयर करने से गलती से भूल जाता है मेरा क्लाइंट, या कोई भी बोनाफाइड इंप्रेशन है कि वो 12% पे टैक्सेबल थी, बट इंस्टेड इट इज टैक्सेबल एट 18%। तो उन केसेस में, जो ऐसे केसेस ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई होते हैं, उन केसेस में डिपार्टमेंट 74 इन्वोक नहीं कर सकता unless and until it is able to produce a cogent evidence which proves that मेरी deliberate intention थी इस टैक्स को evade करने की, टैक्स की चोरी की है मैंने। तो यहाँ पे कहीं there are hundreds of judgments on this aspect that mere identification, केवल ये आइडेंटिफाई कर लेना ऑडिट के दौरान कि एक टैक्स नहीं पे किया गया है जो कि ड्यू था टू दी गवर्नमेंट, आप एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक नहीं कर सकते, आप एलिगेशन ऑफ फ्रॉड नहीं लगा सकते, आप 100% पेनल्टी प्रपोज नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट with Thyssen Curve Industries India Private Limited, CSTAT Mumbai has very elaborately held that. Then there are certain other judgments कि अगर मुझसे डिक्लेयर करने में, जैसे मैंने एक सप्लाई अगर रिटर्न में नहीं डिक्लेयर करी तो डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस में क्या कहेगा आफ्टर डूइंग द ऑडिट, कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी, इनकी इंटेंशन थी इवेजन की, अगर हम ऑडिट नहीं करते तो ये टैक्स चुरा ले जाते। यहाँ पे जजमेंट है कि डिपार्टमेंट को ये कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना है कि इनकी इंटेंशन थी, केवल ये कह देने से कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इट डज नॉट अमाउंट टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज this suppression of facts and willful misstatement of facts are followed by the words with an intent to evade tax. केवल suppression of facts से extended period invoke नहीं हो जाता, केवल willful misstatement से extended period invoke नहीं हो जाता। समझने वाली बात ये है कि उसके साथ साथ intention of evasion होनी चाहिए, तभी extended period invoke हो सकता है। So as professionals, our best help to the client can be that we are able to prove कि extended period गलत invoke किया गया है। With that, even the demand for the extended period will go, and even the penalty at 100% will go. So this was my point. Then few points which need to be considered. अब एक parallel proceedings का question आता है। आज ही सुबह एक मेरे पास एक client का call आया कि उनका audit हो चुका है 17, 18, 19 का। डिपार्टमेंट ने
CGST पे डिपार्टमेंट ने पहले ऑडिट कर लिया, अब स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम ऑडिट करेंगे. So in those cases they cannot do. When the same period has already been subjected to audit, and audit, which is basically a routine administration, it is not any investigation of any particular evasion. Audit is basically a routine administration, so that can be done by my jurisdictional authority only. तो स्टेट डिपार्टमेंट फिर से उसी पीरियड का ऑडिट नहीं कर सकता. देन अगर आप ऑडिट के दौरान कोई टैक्स पे करते हैं और आपको क्लियर नहीं है लीगल प्रोपोजिशन, आप कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप उसे कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये जरूर एक लेटर लिखें कि हमने ये टैक्स अंडर प्रोटेस्ट पे किया है टू बाय पीस ऑफ माइंड and we have to contest it, so you kindly serve us the show cause notice. If they do not serve you show cause notice, after the period gets time barred, you will be entitled for the refund thereof. So these are a few points. Then let me discuss this adjudication part. I will come to a separate PPT. I hope we have time, or we can discuss the queries first. Are we having any queries? Yes, क्वेश्चन है, आप आंसर का सेक्शन रख लेते हैं. किसी मेंबर्स की अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं या चैट पे भी टाइप कर सकते हैं. Meanwhile, I can till the time we get queries, I will discuss this adjudication show cause notice in bit detail. So audit has been done. Now show cause notice has to be served. Sir, is my voice audible? Audible, but little bit थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है. Okay, one second. Sir, there's a bit glitch in my system. Yeah. Hello. Yeah, I'm continuing. Siddhanji, voice not audible. Now is it audible. It's audible. It's audible. Okay. So what is a show cause notice? Supreme Court in Gokal Patel Wolkert says that show cause notice is a culmination of efforts from the beginning of the proceedings, whatever audit proceedings were done, or in case of investigation, in case of search and seizure, whatever proceedings were done, they have to be culminated into a show cause notice, which is the basic inception of the official litigation, and it comprises of the findings of the audit and the proposal of demand. So show cause notice is a condition precedent for demand of dues. Without show cause notice, there cannot be any demand. Department cannot recover from me anything without service of show cause notice, except for certain instances, for like self-assessed tax. If I have filed my GST-01 stating that I have made this much supply and I'm not paying it through GST-03B, it is a self-assessed tax. In that case, it is liable for direct recovery and no show cause notice is required to be served. Yes, if there is a human error, if there is a typographical error, the data entry error, and you have furnished excess liability in one than you were liable to, in those cases, recovery cannot be done. You can explain the case to your jurisdictional officer. It is the, as I said, show cause notice is the first step towards litigation. There are few case laws on it. I have reproduced. I will circulate the PPT. Then 75 is a very, I would say, what principles that courts used to lay, they have been engrafted in the form of law under section 75. And 75(7) particularly says that जो डिमांड प्रपोज हो गई शो कॉज नोटिस में एक बार, वो ऑर्डर में इनहांस नहीं की जा सकती, और जिस ग्राउंड्स पे वो, जिस एलिगेशंस पे वो प्रपोज हुई है, उसके अलावा कोई नए एलिगेशंस पे वो कंफर्म नहीं की जा सकती. सो दिस इज very important provision. Then SCN must be specific and not based on assumptions or presumptions. Department कोई डिमांड प्रपोज करते हुए शो कॉज नोटिस में ये अज्यूम नहीं कर सकता कि इन्होंने XYZ सप्लाई की होगी और ये इनकम, क्योंकि इनकम बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है इसलिए टैक्सेबल है. डिपार्टमेंट हैज टू स्पेसिफिकली अलेज कि ये सप्लायर थे और ये कैटेगरी ऑफ सर्विस सप्लाई हुई है, गुड सप्लाई हुए हैं, और ये रेसिपिएंट है, इनको सप्लाई हुई है. और जो डिफरेंस है, जो
income recorded है, it represents consideration in lieu of this supply. Unless department is able to prove all this, the show cause notice is vague. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. सेक्शन 74 एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक करने की पावर देता है, 5 साल का टाइम पीरियड ओपन करता है, where there is short payment of tax, non payment of tax, erroneous refund, wrong claim of ITC due to fraud, willful misstatement or suppression of facts to evade tax, much more than mere non payment of tax. Or section 73 is other than these things. यहाँ पे अगर नॉर्मल पीरियड की बात कर लें, जो मैंने आपसे टाइम लिमिट्स डिस्कस करी, तो 17-18 को का शो कॉज नोटिस 30 जून 2023 तक डिपार्टमेंट को इशू करना है, अदरवाइज टाइम बार हो जाएगा. और ऑर्डर उन्हें 30 सितंबर 2023 तक इशू करना है फॉर एनी डिमांड पर्टेनिंग टू 17-18. एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहां पे ये 1 वर्सेस 3B के इश्यूज आ रहे हैं, 2A वर्सेस 3B के इश्यूज आ रहे हैं, ये क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल है, डिपार्टमेंट टुमारो कैन नॉट एलिजिड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, तो ये इन्हें नॉर्मल पीरियड में ही शो कॉज नोटिस सर्व करने पड़ेंगे, 73 में ही करने पड़ेंगे. 74 में अगर करेंगे तो वो सस्टेन नहीं करेंगे बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ. एक्सटेंडेड पीरियड 74 की अगर बात कर लें तो 17-18 की डिमांड को प्रपोज करने के लिए डिपार्टमेंट के पास 31 जुलाई 2024 तक का टाइम है शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए, और 30 जनवरी 2025 तक डिपार्टमेंट को ऑर्डर इशू करना है. प्रायर टू दैट, after that the period becomes time barred. Then these points I have discussed with you. जब मेरा एजुडिकेशन ऑर्डर आ जाता है और मैं उससे भी अग्रीव्ड हूं, मैं आगे अपील में जाना चाहता हूं, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के आगे मेरे को केवल 10% प्री डिपॉजिट पे करना है ऑफ द टैक्स अमाउंट, नॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ऑफ द टैक्स अमाउंट. और मैं अपील में मैं आके खड़ा हो जाऊंगा और मेरी बाकी सारी जो डिमांड है वो स्टे हो जाती है. सिमिलरली जब मैं अपीलेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी अग्रीव्ड हूं, तो मैं आगे ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता हूं आफ्टर पेइंग 20% एडिशनल एज प्री डिपॉजिट. सेक्शन 160 इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन विच सेज कि आपकी कोई भी प्रोसीडिंग्स, बी इट असेसमेंट, एजुडिकेशन, रिव्यू, रिवीजन, अपील, रेक्टिफिकेशन, समन, इनवैलिडेट नहीं हो जाती मेयरली फॉर एनी प्रोसीजरल लैप्स बाय द ऑफिसर, एनी मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन. और अभी पीछे भी एक केस आया था जहां पे हाई कोर्ट, अ पर्सन वेंट बिफोर द हाई कोर्ट merely because the form incorrect form was used, but section was correctly used by the proper officer, allegations were perfect. So I could said that we cannot invalidate this proceeding merely because an incorrect form has been used. So section 160 subsection 1 protects the procedural lapses of the officer. Section 160 subsection 2, this is also very important to understand. अगर मेरे को नोटिस आया है और गलत जुरिस्डिक्शन से आया है, या उस पे डिन नंबर नहीं है, या उसका मोड ऑफ सर्विस जो कि सेक्शन 164 में डिफाइंड है वो नहीं है, कोई भी अगर टेक्निकल गलती है नोटिस में, तो मैं उसको पहले ही रिप्लाई में अपफ्रंट इंटीमेट करूंगा डिपार्टमेंट को और नेगेट करूंगा कि मैं इसका रिप्लाई नहीं करता हूं, और मैं उसकी जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं उसी में मेंशन करूंगा फर्स्ट रिप्लाई में. अगर मैं एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ADT 1 आया और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ये बाद में देखा कि वो आपकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी थी ही नहीं, तो आपने एक्ट अपॉन कर दिया, अब आपकी ऑडिट प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट स्टेज पे इनवैलिडेट नहीं हो सकती. This is litigation matrix, a summary. Show cause notice, demand is proposed, adjudication order in original, demand is confirmed, appellate authority 10% pre-deposit, appeal before tribunal, second appellate authority 20% additional pre-deposit, and after tribunal you have High Court and Supreme Court, which are constitutional courts. They can even go beyond the law in the interest of natural justice. With this, I will conclude this. And if we have queries, then we can certainly discuss them. Thank you, sir. Thank you. Limited number of If any queries हो तो सर प्लीज हैंड रेज कर दें.
आई थिंक किसी की क्वेरीज दी थी, किसी ने पीपीटी की प्रेजेंटेशन मांगी थी मैसेज में. I will send it to sir, and then he can share it on the group. I will circulate the PPT. So you can send on crc@ica.in. Pardon, sir? So you can send your PPT on the mail you received from CIRC. Yeah, okay, I will send it. Perfect. So at last, I would say that देखिए audit in the times to come आपके सबके clients के होंगे which are mediocre or big entities, I would say, and department का perception, अगर मैं इसको इनफॉर्मल भाषा में कहूँ तो डिपार्टमेंट का लेंस, चश्मे का लेंस लाल रंग का होता है, उनके लिए सब कुछ गलत होता है, और असेसी के चश्मे का रंग हरा होता है, उसके लिए सब कुछ ठीक होता है. वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू. वी हैव टू सी कि अगर डिपार्टमेंट की एलिगेशन गलत है, अनसस्टेनेबल है, अनरीजनेबल डिमांड है, सो वी मस्ट कंटेस्ट इट. At the same time, we have to see the litigation cost as well. We have to do the cost benefit analysis. मैं एक छोटे से अमाउंट के लिए कहाँ तक लड़ूंगा वो भी मुझे कंसिडर करना है. And that is how we can proceed. But we must be aware of the legal provisions while we are assisting our clients. We must be aware of various clarifications given by the board. Sometimes what officer is saying has already been clarified in favor of assessee by the board, but we are not aware of it. And because there are already 179th circular came yesterday. So we must check it, and then we can submit our response to the officer that this is the clarification given by the board. Circular released by the board is binding on the officers. They are not binding on the assessee, but they are binding on the officers, and he cannot travel beyond those circulars. So with this, I will conclude. पवन सर, अभी और आपसे कोई क्वेरी क्या? आपका हैंड रेज है अभी. One hand has been raised. सर मुझे लग रहा है कि कोई क्वेरी अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है, बट अभी किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं करे हैं, और आपने इतना अच्छा था समझाया कि सब कुछ क्लियर हो गया. तो थैंक यू सर. सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? सब कुछ समझ में आ गया. इसीलिए raised his hand. अगर आप उन्हें अनम्यूट करें तो if he wants to ask. Yes, yes. हाँ हेलो अजी, जो आपने 17 जुलाई से बताया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेट पे चेंज है जी, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, कैसे क्या मैनेज करना होगा उसको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए. मैं बता देता हूँ सर जी. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, प्रीडोमिनेंटली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, या जहां पे कंस्ट्रक्शन रोड, ब्रिज, डैम्स, कैनाल्स या मेट्रो से रिलेटेड है, वहां पे कंसेशनल रेट होता था 12% 17 जुलाई तक. उसको 18 जुलाई से 18% इंक्रीज कर दिया गया. अब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के सिनारियो में देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 14 which is applicable and which overrides all the other provision and says date of supply, date of issuance of invoice, and date of receipt of payment are 3 events. If out of these 3 events 2 events are happening before the date of change in rate of tax, that is 18th July, then older rate will be applicable. If 2 events out of 3 events are happening after the date of change in rate of tax, that is 18 July, then new rate will be applicable. तो आपने जो काम मेजर कर दिया 17 जुलाई तक, अगर आपको उसकी पेमेंट 17 जुलाई तक आ चुकी थी आपके अकाउंट में और आप इनवॉइस बाद में भी इशू करेंगे तो वो 12% पे चार्ज होगा. और या अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है 17 जुलाई तक, 17 जुलाई के काम का, चाहे पेमेंट बाद में भी आए, उस पे भी 12% रेट लगेगा. इन एनी अदर सिचुएशन 18% विल बी टैक्सेबल.
जी, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इफ Perfect. योर क्वेश्चन। जितेश जी की जो क्वेरी है वो तो सर ये आपको रिक्वेस्ट दे दी गई है, कई लोगों ने भेजी है और ये जो पीपीटी है मेल कर दी जाएगी सर। और अभी किसी क्वेरीज मुझे लग रहा है और कोई क्वेरीज नहीं है तो सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं। राइट। हेलो, सिद्धांत जी ने बहुत अच्छा जो है सेशन लिया और बहुत सारी नई नई चीजें क्लियर हुई इस सेशन के बाद। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो है सेशन को कंप्लीट किया, P&L, बैलेंस शीट और ऑडिट में क्या क्या पॉइंट्स डाले जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़े समझने को मिले कि प्रैक्टिकली ये चीजें हमें देखनी है और कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स इश्यू हो सकते हैं, डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पे नोटिस इश्यू कर सकता है और क्या क्या टाइम में कर सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल रही और बहुत अच्छा सर सेशन रहा। तो इसी के लिए बहुत बिग थैंक यू आपको कि आपने जो है इतना अच्छा सेशन दिया। और लर्नर स्पीकर पाठक जी को और सेशन के चेयरमैन सर अतुल मल्होत्रा सर और जितने भी मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहे CIRC प्लेटफॉर्म में, उन सभी को मैं ऑनर करना चाहता हूँ, फीलिंग ऑनर्ड टू प्रपोज दिस वोट ऑफ थैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ CIRC ऑफ ICI एंड ऑन माई बिहाफ। So thank you, sir. Thank you, sir. So should I end? I think चेयरमैन सर हैं क्या भी, अगर हूँ तो मैम सर एक बार और किसी से बात करिए। सर नहीं, चेयरमैन से नहीं। चेयरमैन सर तो जो CIRC के और मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के, तो कंक्लूड कर लिया गया सर, फिर तो एंड किया गया। यस सर, एंड कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.